हाउ टू कट वीडियो इन VLC। VLC में वीडियो को हम कट या ट्रिम किस तरह से करेंगे, आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले नंबर आपको क्लिक करना होगा उस वीडियो पर जिसे आप कट करना चाहते हैं। जैसे कि मैं ये वीडियो को कट करना चाहता हूँ, तो इसे आप VLC में ओपन कर लीजिए। डबल क्लिक करके VLC में ओपन कर लिया हूँ मैं, एंड यू कैन सी द वीडियो लेंथ इज 11 सेकेंड एंड आई थिंक 5 सेकेंड पर मैं ये कट करना चाहता हूँ। ये किस तरह से करूँगा, यू कैन सी फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक दिस इज, मैं यहाँ पर इसे कट करना चाहूँगा इस लाइन पे। तो क्लिक ऑन व्यू टैब, then click on advanced control, then you can see the red button is appear on in this or lower side. Then go to the time where you want to click on cut the video, so you can play this video. मैं यहाँ से कट करना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ से ये हाईलाइट मैं कर रहा था वीडियो में, तो मैं यहाँ से कट करूँगा। देन आई क्लिक ऑन दिस एंड पाउज, एंड जैसे ही मैं प्ले चालू बटन पे क्लिक करूँगा, देन आई क्लिक ऑन दिस रेड बटन, एंड लास्ट जैसे ही ख़त्म होने वाला वो रहेगा वीडियो, मैं इस पर फिर से ऑफ कर दूँगा। इसे मैं प्ले कर रहा हूँ इस पर और इस पर, एंड देन क्लिक। So the video is saved, and then I close this and go to this PC and go to the videos, and you can see VLC record. So this is less than 0 second, so this is not I have mistake। तो ये मैं ओपन करूँगा VLC में, देन आई थिंक हाउ टू जब मैं बोल रहा हूँ उस समय मैं कट करना चाहूँगा वीडियो को। तो दिस स्विच एंड आई क्लिक ऑन दिस प्ले, एंड यू कैन सी द रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। देन आई क्लिक दिस इन दिस टाइम। तो you can see I close this and I go to this PC and open videos, and this is my file. Then click on it and you can see my video is recorded and trimmed. So this is the way of trim any video in VLC. I delete this and